tell you how exams are conducted in Russia, and if you didn't pass the exam in the first attempt, simple practicals, written and viva. Hello everyone, welcome back to a new YouTube video. Today we are going to talk about how medical exams are conducted in Russia and what are the subjects that you're going to have for your 6-year MBBS journey. This video is going to be a very short video because I'll explain everything very quickly. The MBBS in Russia is a 6-year program. The first 3 years you will have preclinical subjects like biochemistry, anatomy, physiology, pharmacology, pathology, etc. And the next 3 years you will have clinical subjects like medicine, gynecology, surgery, etc. There are a lot of subjects, so I list all the subjects from first year to 6 years. The final year, the 6th year, is fully clinical. The students mainly do practical work in the hospitals and rotate through various departments. First of all, whatever exams you give, even if you pass those exams, you fail those exams, or you did not give the exam, everything is recorded in a book called as ZACHOT book, or you can say a credit book. I'll add a picture here as to how that book really looks. Okay, in Russia we have medical subjects and non-medical subjects. For non-medical subjects, there aren't any huge exams happening. You just, like, on the last day of the class, the teacher will give you a short test. You just have to solve the test, pass the test, and she will give you Zachot. That means in your Zachot or in your credit book, she will give her signature. Obviously teachers' signatures are necessary. Without her signature, that means you have not passed the exam or you have not cleared that specific test. And now talking about medical subjects. In medical subjects, obviously you need to go through exams. For to be able to give medical subjects, you need to be attested first, and as I already explained, to be attested means that you have attended all the classes, and even if you have missed a single class, you have cleared that. So let's talk about how exams are conducted here. First you have the practical part, and then you have the written part, and then you have the oral part. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी बोन्स रखी होंगी, आपको उनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक बोन लेनी है. जो भी आपके टिकट में आपके टिकट में मार्क किया होगा, सपोज कोई भी स्पेसिफिक बोन है तो आपको बतानी ये बोन है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है. सो दिस इज हाउ प्रैक्टिकल इज कंडक्टेड, एंड उसमें आपको 5 में से ही मार्क्स मिलते हैं. 5 इज लाइक द क्रेडिट पॉइंट्स. सो 5 में से 4, 3, 2 डिपेंड्स हाउ यू परफॉर्म. नाउ in the same, again you will get a ticket. In that you will have 4 questions and maybe 1 situational task, maybe 3 questions and 1 situational task, depends. Those are 3 to 4 long answer questions. You have to sit and write everything, explain everything properly, and then once the teacher calls you. Now for this exam, मतलब बहुत सारे टीचर्स होते हैं, 3-4 टीचर्स होंगे एक रूम में और 5-6 बच्चे होंगे. आपके टिकट में जो भी है उस हिसाब से आपको सब लिखना है. उसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा, आपको जाना है. यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू रियली हैव रिटन इन योर पेपर. आपने जो भी अपने पेपर में लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है. इफ the teacher is satisfied with your answer, तो okay बोलेंगे and they'll move to the next question. If they're not really satisfied, then they'll ask you something, like they'll cross question you. Okay, तो ये ऐसा है तो वो वैसा क्यों है. On the same day only you'll get to know if you're passed or not. एक कंक्लूजन में बताओ तो सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा. प्रैक्टिकल में जो भी आपको आपके टिकट में नेम्स दिए जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, 10 लेबलिंग्स, 12 लेबलिंग्स, वो आपको फाइंड आउट करना है उस प्रैक्टिकल रूम में, और सब उसके उस स्पेसिफिक लेबलिंग के बारे में आपको जितना भी पता है वो सब आपको बताना है. ओके, नाउ नेक्स्ट यू हैव रिटन पार्ट. रिटन टिकट में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और एक सिचुएशनल टास्क मिलेगा. आपको जितना आता है आपको सब लिखना है. लॉन्ग आंसर में लिखना है, दोज आर डिटेल्ड आंसर. यू हैव टू राइट एवरीथिंग. जब आपका टर्न आएगा, टीचर आपको बुलाएगा, यू हैव टू गो टू द टीचर एंड शी विल आस्क ही और शी विल ask you everything about what you have written. So basically why do they ask is क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी आपने किसी से देख के लिखा हो या किसी ने आपको बताया और फिर लिखा. आपने जो लिखा है आपको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं, उस चीज़ के लिए दे आस्क यू थिंग्स ओरली. ऑल्सो इन सम सब्जेक्ट्स वी डू हैव MCQ टेस्ट. ओके, तो कंप्यूटर पे आपके MCQ बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल एनाटमी, फिजियोलॉजी वगैरह के लिए. सो यू विल बी टेकन टू अ कंप्यूटर लैब एंड देयर यू विल हैव 40 क्वेश्चंस, 40 minutes, something like that, and you just have to answer all the MCQs. It is not very difficult, of course, but your concepts need to be thoroughly clear. Okay, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर होने चाहिए, बिकॉज टीचर्स हियर आस्क अ लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस. आप उनको कुछ भी आंसर करेंगे, वो आपको रिटर्न एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं. सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट. If you didn't pass in the first attempt, you will get 2-3 more attempts, depends on the universities. I thought it is exam season because हमारा semester is going to end when we soon have exams. So I thought why not
explain you something about how exams are conducted in Russia. So I tried to make this video very short, quick and simple. Thank you for watching the video. If you really like the video, please like, share, subscribe. And if you have any ideas as to what I should make videos on, please comment below. And thank you for watching. Bye.